Hello everyone. Very good evening to all of you, and I hope these ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। Am I audible to all of you? Hello everyone. Welcome to East Coast Education. जोड़े हमें live class रे MCQ discuss करूँ। After 1 month, मोर देह खराब थी वजह को मैं क्लास टी करी पारी नथली। बहुत बहुत खराब देह जो मैं क्लास टी करी पारी नथली। एंड वर्तमान हमें क्लास टू आरंभ करिवा। एंड मु बहुत पिला माने किसी पिला एमती होते जो मैंने पेड क्लास ପାଇଁ ବି କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି କ୍ଲାସ ହେଇପାର ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କରିପାର ନଥିଲି 1 month ଗୋଟେ ଥେରାପି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସୋ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓକେ ଏଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ରେ ହିଁ ହବ तो प्लीज समस्त पे देखिए क्लास टी आज क्लास टी रही कम्प्लीटली पॉलिटी बेस ओके पॉलिटी आमर डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्वेश्चन गुड़ाक आज है ना बहुत पिला मेसेज भी कर क्लास के हम मुझे पार नी क्लास से सो सॉरी आ बहुत पे कर किसी पिला पे करते पेड क्लास से क्लास भी हो पारानी जेहेतु मु शारीरिक रूप से सुस्थ नी एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड से पैसा भी मुझे फेरई देवी ओके तो समस्त को प्लीज टी अनुरोध प्लीज टी कोऑपरेट करियो ओके चलो आरंभ करियो देखो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन व्हिच ऑफ द आर्टिकल ओके ओके इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन व्हिच ऑफ द आर्टिकल आर्टिकल 320 324 280 एंड 148 कौन रहिबो पिला माने माने कहि पारो सठिक उत्तर टी दियो ओके आई एम ऑडिबल और नॉट प्लीज से आई थिंक आई एम ऑडिबल ओके अच्छा मासे पर क्लास हो तो बहुत लैंग्वेज में भी न हो पारते आउ शारीरिक सुस्थता थिबा जोगु मु क्लास टी करि पानथली पिला माने आई एम सो सॉरी फॉर दैट थिंग ओके देखो सठिक उत्तर टी पिला माने जदि हम पाइबा राइट आंसर टी कोन रहबो एटी आर्टिकल 324 ओके कोन रहबो आर्टिकल 324 हो एटी सठिक उत्तर टी ओके नेक्स्ट बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ओके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जानिबा इज प्रोवाइड अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल ओके केते नंबर आर्टिकल रे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को विषय रे मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे के कहि पारो प्लीज हम आंसर दियो समस्त देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जोटा कि सीएजी रूपे हमें कहते तांके आर्टिकल 148 हमर मेंशन है बहुत भलो आर्टिकल 148 रे हमर मेंशन है ओके नेक्स्ट बा now finance commission is constituted under finance commission is constituted under which of the following article 324 280 148 338 कौन रहबो प्ले माने कहि परियो तो सठिक उत्तर टी कौन रहबो आर ओके देखो फाइनेंस कमिशन is constituted under article 280 article 280 ओके केते नंबर article 280 अंडर एटा ओके नेक्स्ट बा नेक्स्ट बा UPSC is mentioned under which of the article okay तो UPSC Union Public Service Commission केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन है पिला आर्टिकल 315 320 323 324 ओके UPSC Union Public Service Commission रूप हम जोड़ा जानती ओके तो सेटा हमर केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन है पिला माने आर्टिकल 315 320 323 324 ओके देखो सठिक उत्तर पिला माने आर्टिकल 315 रे पाइबा आर्टिकल 315 रे हम पाइबा नेक्स्ट बा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल केते रे अनुसार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय मेंशन करा जाय पिला माने ओके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मेंशन करा जाय पिला माने आर्टिकल 76 हो जाय केते नंबर आर्टिकल 76 हो जाय एटा मेंशन है ओके नेक्स्ट बा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर ओके देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केते नंबर आर्टिकल हो जाय ओके
आर्टिकल 340 42 338 बी 324 पिलाने जदि का सठिक उत्तर हम देखा आर्टिकल 338 बी आर्टिकल कौन रहो 338 बी अनुଯାयी हमें पाइबा ओके नेक्स्ट बात स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन मेंशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन केते नंबर रे मेंशन हेति पिला आर्टिकल 315 148 280 324 ओके एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि आमर ओडिशा देखिए ओपीएससी कह जाए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिफरेंट रही है से प्रकार यू नो आर्टिकल 315 अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन से द पब्लिक सर्विस कमिशन यूनियन एंड स्टेट आर्टिकल 315 अनुसार यहाँ हम नेक्स्ट बात इलेक्शन कमिशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सबमिट कहा को करे निजर रिपोर्ट गुड़ा ओके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देखा पार्लियामेंट देखा पे सठिक उत्तर जानते चीफ इलेक्शन कमिशन सबमिट करते रिपोर्ट क्या पे प्रेसिडेंट को सबमिट करते ओके प्रेसिडेंट को से सबमिट करते ओके नेक्स्ट बात Delimitation of the constituencies is done under okay मंजरी बहुत बढ़िया है ना बहुत दिन पर मु आज बैक करছি तो थैंक यू मंजरी क्लास को अटेंड कलो दीर्घ मासे तमाम मु देह सुस्त एते इतला जे मु क्लास भी कर पाए नथली एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देर की जाईची तो सेटा क्लास हे पाउथला पेड क्लास भी जो माने पैसा भी दिले से मानकर भी क्लास कर पानथली ओके सुनील वेरी गुड इवनिंग मंजरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप कि क्लास चलो किंतु रेगुलरली इवनिंग रे ही हमर क्लास हो ओके ओके देखो डेलिमिनेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन अंडर डेलिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना इन कोलैबोरेशन विद हाई पावर बॉडी नोन एज डेलिमिनेशन कमीशन ओके इट इज द राइट आंसर नेक्स्ट बात है ना फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर ब्री है ना फाइनेंस कमीशन से हमर केते वर्ष को थरे हाँ एबे अच्छी बहुत माने बहुत गुडा थेरापी नेला पर वर्तमान मु टिके हील हेची जोडा पे टिके भलो अछि सेटा पे क्लास करियो चेष्टा करछि ओके तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर एवरी 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष ओके कोन रहबो पिला माने देखो 5 वर्ष को थरे ओके 5 वर्ष को थरे एटा हिता ओके नेसिबा हु अपॉइंटेड द फाइनेंस कमीशन की ए फाइनेंस कमीशन को से जगह अपॉइंट करे सुनील एंड मंजरी देखो हु अपॉइंटेड द फाइनेंस कमीशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस एंड पार्लियामेंट देखो 5 वर्ष बहुत बढ़िया देखो बहुत बढ़िया देखो सठिक उत्तर पिला माने हबो प्रेसिडेंट ओके कोन रहबो प्रेसिडेंट इज राइट आंसर कोन रहबो प्रेसिडेंट बहुत गुडे क्वेश्चन अछि ओके डोंट वरी अबाउट इट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर चेयरमैन यूपीएससी रो चेयरमैन केते वर्ष पय ताकर ऑफिस टा को होल्ड करी रखि तांती ओके केते वर्ष तक टर्म रहता है कोन रहबो पिला माने 5 यू नो 5 वर्ष टू 60 वर्ष 6 वर्ष टू 65 6 टू 62 5 टू 62 कोन रहबो पिला माने सठिक उत्तर दियो देखो राइट आंसर टी कोन रहबो जागा ओके यस 6 वर्ष 65 ओके 6 वर्ष 65 बाबू मंजरी एंड सुनील ओके 6 वर्ष 65 ईयर पर्यंत तक टर्म नेक्स्ट बा सीएजी कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑडिट करे कहार अकाउंट को ओके कहार अकाउंट गुडा को सीएजी से जगह ऑडिट करती only central government only state government both center and state only public servant unit okay कौन रहबो पिला माने ओके पब्लिक सेक्टर यूनिट या अथवा बोथ सेंटर एंड स्टेट कौन रहबो देखो ऑप्शन सी रहबो राइट आंसर ऑप्शन सी ला सेंटर एंड स्टेट जते भी अकाउंट सब ऑडिट करियो किए करियो सीएजी करियो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल कमेंट बॉक्स में लगाओ वर्तमान सीएजी की अछन पिला माने ओके है ना सीएजी वर्तमान की अछन आरआईएम पे केमती प्रिपरेशन चलती समस्त कमेंट बॉक्स में लिखियो ओके Attorney General must be qualified to be appointed as okay Attorney General must be qualified to be appointed से appoint को जगह हे परिबे जो दियो Attorney General गोटे qualified person ओके कौन हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज गवर्नर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हे परिबे मंजर इन सुनील कौन रही पारे सठिक उत्तर कहि परिबो जदी मु भाबी आंसर दे पारछ देखो सठिक उत्तर कौन रहबो तांका क्वालिफाइड एति होछंती जे सुप्रीम कोर्ट जज मते हे परिबे ओके Attorney General is qualified as become a Supreme Court judge. Okay, option B is the right answer. Next one. The Attorney General has the right to speak. Attorney General को जगह संजय मूर्ति yes. देखो Attorney General has the right to speak in Lok Sabha only, Rajya Sabha only, both houses, Supreme Court only. कौन रहेगा मंजरी सुनील ओके कौन रहेगा राइट आंसर टी देवो चेष्टा करो देखो देखो पिलाने सठिक उत्तर रहेगा राइट आंसर है बोथ हाउसेस बहुत बढ़िया ओके बोथ हाउसेस बहुत बढ़िया मंजरी बोथ हाउसेस ओके देखो नेक्स्ट बा
National Commission for SC, ना National Commission for SC, Article 338, 338A, 338B, Article 340 केते नंबर आर्टिकल रे आसीयो पिला माने ए जेति के क्वेश्चन मु आज करूची सेति के टिके देखि दियो कोसी दियो कारण नेक्स्ट टाइम जदी तुम ए जिंस केवल रिवाइज करियो पड़ियो ना कि घोषियो पड़ियो ए जिंस धरि चलो मन जदी ओके देखो सठिक उत्तर पिला माने रहबो आरो आर्टिकल 338 ओ आर्टिकल 338 कोन देछि नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट ओके है ना ऑप्शन ए रहबो एडा रहला ऑप्शन ए ए छोट छोट डिफरेंस गुडा को देखला एडा एससी एडा एसटी एडा हो ओबीसी ओके ए तीनटा देखो आर्टिकल 338 हो एससी एडा होची 338 ए होची एसटी एंड देखिया 338 बी होची ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास ए तीनटा जाको मन रखि दे तो पिला माने मु एतिकी ये कोची कि तुमको बारंबार मन रखिया को न पड़ो ए जिनिसटा ओके देखो देखो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है ना नेशनल कमीशन फॉर एसटी टिके अगर कहली पिला ने कोन राइट आंसर 338 ए ओके आर्टिकल 338 ऑफ ऑप्शन बी होबा सटीक उत्तर ओके है ना एबे पर्यंत कौन असुविधा देखो बैकवर्ड क्लास कमीशन ओके वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ओके द बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केते नंबर आर्टिकल रे जो बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाय ओके दैट इज इन अंडर आर्टिकल 102 ओके 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलछ ओके हाँ कुह सुनील कुह कौन सजेशन दरकार कुह ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इज अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के अंडर केते नंबर आर्टिकल 344 280 315 324 है ना कौन रही पारे पिला माने आर सठिक उत्तर जति के देई परियो मु बाबू आंसर देई परियो समस्त ओके ऑफिशियल लैंग्वेज हम आगु बहुत थर क्लास करी छे पिला माने ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इज अंडर आर्टिकल it is under article 344 okay 344 under article 344 अनुଯାयी आसे ओके 344 अनुଯାयी कौन सुनील कौन तमर कौन पचारियर अछि को सजेशन हां कौन देबा को मु कहि पारि ओके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अंडर ओके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अंडर आर्टिकल 76 आर्टिकल 165 आर्टिकल 315 आर्टिकल 280 कौन रहबो पिला माने सठिक उत्तर लेखो ओके देखो देखो एडवोकेट जनरल होगा आर्टिकल 365 165 ओके 165 ओके ने जीवा स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 243 के 228 315 पिला ने सठिक उत्तर जे देखिबा स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 243 के अनुसार बेला केता आसो 243 के अनुसार एटा आसे ओके ओदे 243 ओ 44 नै हला देखो यूपीएससी सबमिट एनुअल रिपोर्ट ओके मोर गंजाम निकेतन एंट्रेंस क्लियर हे जाई हे छी जहां कि यूपीएससी पे फ्री कोचिंग हेबो जॉइन करबी कि नै यस करो करो किछ असुविधा नै अरे देखो अपॉर्चुनिटी मिलु कि भाई केबे छाड़ियोनी ओके कोन सी जगह ज्ञान मिलु ना इमति नै मु गोटे कथा कहूची अपॉर्चुनिटी पे सब दौड़ है एमती ना कि अपॉर्चुनिटी माने कि नेगेटिवली ना पॉजिटिव वे रे दौड़ जो भल जगह मिलूची देन जाओ एंड आ गोटे जिन कहूँ कॉम्पिटिटिव लाइन रे देखो सीरीयस है कि 1 ईयर दियो हला 1 ईयर कंप्लीटली इमिति सीरीयस दियो खाइबा पीबा भूली जाई करी कलेक्टर स्टार्ट करछन बहुत बढ़िया है ना सर कुआडे पळैथले अरे सिकोन बहुत दिन पर देखालो मोर स्वास्थ्यगत असुविधा थिला जोटा कि मु बहुत डीप डिप्रेशन रे पळैथले देखो मु गोटा आज जिंस कहूँ कि देखो जीवन में जहाँ भी हो ना डिप्रेशन रे जदि जाऊ तो निज को निजे हिल करे चेष्टा कर अथवा सब बंद करी कुआडे जाओ बुलो निज फैमिली फ्रेंड्स मान सहित टाइम स्पेंड करो निजर बिलोंगिंग्स मान सहित टाइम स्पेंड हस खेल मजा करो जहाँ भी प्रॉब्लम से साइड लाइन करो प्रथम निज ऊपर फोकस करो ओके तो डिप्रेशन को केबे जो चेष्टा करिवो जदि डिप्रेशन आडको जाऊ चबाल तो निज को निज हिल करो ओके मु बहुत डिप्रेस थिली हां हां थैंक यू ना कोन हला बहुत डिप्रेस थिले माने एते डिप्रेस माने कोन हला ओके तो समस्ते निज को निज हिल करो डिप्रेशन को जाओ तो डोंट वरी डोंट गो टुवर्ड डिप्रेशन निज बिलोंगिंग्स मान पाओ टाइम स्पेंड करो खेल हस बुलो निज खुशी करिया पे जा करिया उठी करो किंतु डिप्रेशन को के जीवन एंजाइटी एडु के जीवन ओके
ଯେତେ गुडा इंपोर्टेंट काम सब छाड़ आगे निजर माइंड सेट को हिल करो देन सब किसी सॉर्ट आउट हो ओके थैंक यू एते दिन पर सुनील सिकुन एंड देन हमर मंजरी हमको क्लास कला पर जॉइन कला थैंक यू all of you thank you all of you okay यूपीएससी निजर एनुअल रिपोर्ट कहाँ को सबमिट कर प्रेसिडेंट को सबमिट करो ओके का प्रेसिडेंट को सबमिट करो ओके next finance commission submits its report to finance commission submit its report to parliament prime minister president in control auditor general okay सर एबे तो एज 24 यूपीएससी ପାଇଁ टाइम हेले 3 वर्ष एबे तो एज 24 यूपीएससी ପାଇଁ टाइम जहा हेले 3 वर्ष लागि जिवो अरे गोटे कथा देखो मु गोटे कथा कहूची यूपीएससी ପାଇଁ प्रिपरेशन रहउछ ना तुमको करंट अफेयर्स टा को 2 वर्ष दरकार है इनति नै कि तुम आज 2 वर्ष पढियो तुम जदी आरो वर्ष देबाक चाहछो अथवा एबे अप्लाई कर दिछो एबे देबाक चाहछो देन बहुत गुडा प्लेटफॉर्म अछि जोडा कि 2 वर्ष करंट अफेयर्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करछन दृष्टि आईएएस हो अथवा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ओके तो सेटा गुडा एनसीईआरटी ପାଇଁ देखो अच्छा ता आगुरा और जिंस मु कहूची कि तमे प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन जाको पढो नो आंसर दियोनी केवल पढो केमिति आसुची कोन नै ए गुडा को सब ओवरव्यू करो देखो केमिति आसुची कोन नै ओके यूपीएससी ପାଇଁ जो पढतो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन देखो करंट अफेयर्स टा को देखो दीट जाको इंटरलाइन करो देखिबो से जगह तमे सॉर्ट आउट किछि परबो एनसीईआरटी को क्लियर करियार अछि मना नै ता माने एडा नै कि एनसीईआरटी पूरा बही दर पड़े बहुत गुडा फ्री मटेरियल भी मिल जाउची से गुडा को भी देखो ओके एनी गाइडेंस दरकार मते से डायरेक्ट कांटेक्ट करि पारो ओके आ मोर चेष्टा जेती हो मु से कर परियो के 28 रे टारगेट अछि जो अच्छा देखो ता आगुर किंतु भाई गोटे जॉब सिक्योर कर दियो आई सजेस्ट कि जॉब गोटे सिक्योर मोर वाला भूल करियोनी के भी गोटे जॉब सिक्योर करो प्रथमे देन तमे ता सहित रही से भीतर करो ओके जदी फुल्ली प्रिपेयर करछो ग्रेजुएशन जो 18 वर्ष कम होइछो 18 वर्ष भीतर 20 भीतर अछो देन लागो मना नै हला किंतु जदी तुमर बयस टी अधिक हो जाइए देन से जगह रे एरे ट्राई करो कि निजर कौन सी गोटे फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखी ता ऊपर काम करला देखो फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट केबे सबमिट का को सबमिट करो प्रेसिडेंट को ओके नै जीवा फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके के कोइ परबे पिला पार्ट 2 3 4 एंड 5 ओके कोन रहबो पिला माने कोन रहबो के प्लीज समस्त को अनुरोध प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ओके the fundamental right are part 3 of the constitution part 3 of the constitution mentioned is okay next one right to equality is covered under article right to equality is covered under the article which of which of the articles okay 12 to 35 14 to 18 19 to 22 and देखियो 23 to 24 कौन रहबो अच्छा अच्छा नहीं डोंट भूल करो नी ओके निजु को निजे सेल्फ सस्टेन करे चेष्टा करो ओके है ना हमको कहला भी बहुत लेट हो जाए पिला है ना तो सेटा पे समस्त चेष्टा करो कि गोटे वर्ष भीतर सीरियसली जॉब करो एंड चेष्टा करो जॉब करे हो जिवो ओके डोंट वरी यूपीएससी ओपीएससी करो थाई अन्य जॉब गुडा को भी ट्राई करो देखो राइट आंसर कोन आर्टिकल 14 टू 18 ओके 14 टू 18 देखिबा आर्टिकल 14 गारंटी कोन करे पिला आर्टिकल 14 कोन गारंटी करे फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वालिटी बिफोर लॉ रिलीजियस फ्रीडम कल्चरल राइट्स कोन रहबो सुनिले मंजन सिको देखो कोन रहबो आर्टिकल 14 कौन गारंटी करे पिला माने आर्टिकल 14 कौन गारंटी करे फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वालिटी बिफोर लॉ रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल राइट्स ओके कौन रहबो पिला माने देखो सठिक उत्तर पिला माने इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन रहबो इक्वालिटी बिफोर लॉ हला इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत बड़ा सिकोन बहुत बढ़िया ओके समस्ते आरआई जो माने जो अप्लाई करि देइछो पिला माने गोटे जिंस मन रखो समस्ते एबे इमिति प्रह जिमति कि जीवन रे एटा लास्ट तापर प्रह ही जो सेमति भाबी कि पाठ पढो हला आ जहाँ हम जोड़ा आसुनी घोषी दियो किसी असुविधा नहीं ओके मैथ आसुनी घोषी दियो जहाँ आसुनी घोषी दियो इमिति पढ़ो यही वर्ष रे तुम चाकरी करि जिवो ओके नेक्स्ट बा अनटचेबिलिटी इज एबोलिश अंडर अनटचेबिलिटी एबोलिश अंडर है ना आर्टिकल 14 15 17 18 ओके अनटचेबिलिटी एबोलिश कर का अंडर आर्टिकल 14 15 17 18 कौन रहइबो मंजर जेंट सिकोन सुनील कौन रहइबो पिला ने देलो देखियो राइट आंसर टी ओके देखो हमर इवनिंग रे क्लास शेड्यूल होबे थरो मॉर्निंग रे ही परिबोनी जदि हम बोले प्राय रेकर्डेड क्लास जीवो समस्त टिके तत्पर थिबो ओके अच्छा देखो गोटे कथाटे तुम कैरियर को ये करी करो इमती नहीं कि मुझे डिमोराल करछि किंतु तुमको ठीक लगुची करो हला किंतु भाई देखो जीवन में जॉब गोटे दरकार ही प्राइवेट जॉब रे करिवनी चेष्टा करो कि गवर्नमेंट जॉब करिया ओके हला
आ गवर्नमेंट जॉब वंस रहीगलो देन तुमको किछि होबनी कारण तुम ऑलरेडी गवर्नमेंट अछो देन तुमको सेठी यू देखो समस्त पे गवर्नमेंट जॉब जति अछि तार गोटे सिलेबस थाए जो कि कॉमन सिलेबस किछि रहै ना तापर यूपीएससी ओबीसी में किछि एक्स्ट्रा पढ़िया पड़े ओके तो से जिनसटा पे मु कहि दिबी गाइडेंस पर ओके कॉमन सिलेबस जदि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एति मास्टरी आरंभ करागे ओके देखो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा Evolution of titles mentioned under and evolution of titles is mentioned under article 16, 17, 18 and 19. Okay. कौन रहेगा पिला मैंने आर सटीक उत्तर दियो. Evolution of titles. Okay. Evolution of titles जो देखिए पिला मैंने सटीक उत्तर पाइबा आर्टिकल 18 अनुसार है आर्टिकल 18 रे evolution of title विषय लेखा जाए क्योंकि evolution of title okay समस्त अरिथमेटिक मैथ रीजनिंग एटा को स्ट्रांग करो ला मैथ रीजनिंग स्ट्रांग करो एति स्ट्रांग करो मैथ रीजनिंग आखि खोलिला मात्र तमर जंती हे जाउ ओके देखो नेक्स्ट बा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 18 19 20 21 ओके कौन रहबो पिला माने कौन रहबो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केतन नंबर आर्टिकल ऑन जाए देखो काण तुम सुना खोजिया जाए हीरा खोज नब से जिनसा भी धरिक चल है राइट आंसर आर्टिकल 19 ए कौन दउछि the constitution guarantee all citizen fundamental rights freedom of speech and expression that right allow individual to express their thoughts or express their thought opinion and beliefs freely through various medium such as word writing printing and pictures okay next protection in respect to conviction for offense okay देखो एटा देखो प्रोटेक्ट एटा पता रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफेंस देखो एटा इंपोर्टेंट पिला माने ओके देखो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर आर्टिकल 19 20 21 22 कोन रहबो पिला माने आरो सटीक उत्तर टी कोन रहबो मंजरी एंड सुनील एंड सिकन कोन रहबो पिला माने प्लीज समस्त बंधु प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो ओके देखो राइट आंसर तो पिला देखा आर्टिकल 20 हम सठिक उत्तर आर्टिकल 20 हम राइट आंसर ओके आर्टिकल 20 बहुत बढ़िया नेक्स्ट जीवा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 19 20 21 22 है ना कौन रहबो पिला सठिक उत्तर दियो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल देखो आर्टिकल 21 ऑन जाए सर आपण टिके अच्छा अच्छा गंजाम निकेतन अच्छा मुझे पर देखी ओके आर्टिकल 21 ऑन जाए ना देखो नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर व्हिच आर्टिकल 22 23 24 25 है ना प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल कौन रहबो पिला देखो इट इज आर्टिकल आर्टिकल 23 ओके आर्टिकल 23 ऑन जाए इडास ओके आर्टिकल 23 इन जाए इडास ओके नेक्स्ट जीवा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन hazardous इंडस्ट्रीज इज अंडर आर्टिकल 23 24 25 एंड 26 कौन रहबो पिला मन देखला देखिबा ओके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन hazardous इंडस्ट्रीज अंडर आर्टिकल 23 24 25 एंड 26 देखो पिला राइट आंसर आर्टिकल 24 होगा देखो आर्टिकल 24 24 नंबर आर्टिकल होगा सेटा हो सटीक उत्तर ओके नेक्स्ट जीवा फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम केते नंबर आर्टिकल रु केते नंबर आर्टिकल भीतर आसे ओके फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड अंडर केते नंबर आर्टिकल भीतर आसे कोन रे मंदिर सुनील एंड शिकुन एंड ऑल ऑफ यू जो माने भी देखो तो प्लीज समस्त को अनुरोध प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ओके देखो राइट आर्टिकल 25 टू 28 भीतर सेला पिला माने आर्टिकल 25 टू फंडामेंटल राइट रो मो स्पेशल गोटे क्लास आ पूरी थोरे आनीबी है ना डिटेल इन डिटेल मु कहबी सेटा को तम समस्त घोषित दबो हला आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिथिले पिला माने ओके किए कहिथिले आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू बी आर अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल कौन रहेगा पिला माने सटीक उत्तर दियो देखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर होगा बी आर अंबेडकर ओके बी आर अंबेडकर ही राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच फंडामेंटल राइट्स आर रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को फंडामेंटल राइट रिमूव कोर्स द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन राइट इक्वालिटी राइट टू प्रॉपर्टी राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट ऑफ रिलीजन कौन रहबो पिला माने बहुत इजी क्वेश्चन रा एटा बहुत थर कराई छी
It is right to property. Well, right to property is a legal right under 300. Okay, 300. ହେଲା ମନେ ରଖିଥା है ना प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है नहीं जीवा राइट टू एजुकेशन 16 टू 14 वर्ष भितर राइट टू एजुकेशन 16 टू 14 वर्ष भितर अंडर आर्टिकल 19 21 21 ए आर्टिकल 22 कौन रहबो पिला माने राइट टू एजुकेशन 6 टू 14 इज अंडर राइट टू एजुकेशन 6 टू 14 इज अंडर केते रहबो पिला माने के कोन रहि पारियो कहि पारियो देखि राइट आंसर ओके हाँ केउंझर रे अछि बासी 27 रे आसली एबे अछि ହେଲା କେଉଁଝର ଅଛି କାଲି ତମର ସେପଟ ଲାଇନ ଟି ଭିଜିଟ କରିବାର ଅଛି ଚମ୍ପୁଆଡ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ 6 ଟୁ 14 ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ ଓକେ କେତେ ରହିବ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ ଅଣ୍ଡର ଆସେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହଉଛି which writ is issued to produce a your detained person before in the court ଓକେ ହେଲା କଣ ରହିବ ପଙ୍କଜ right answer which writ co-writ na how many writs are in the in constitution देखो writs is issued to you produce a detained person before the court को ये अनुଯାयी अछि पिला मन देखो mandamus statutory habeas corpus co warrant prohibition कोन रहबो पिला मन आ भितरु देखो सटीक उत्तर रहबो it is habeas corpus okay habeas corpus number C option C is right answer okay next fundamental rights are enforceable by okay fundamental rights are enforceable by high court only supreme court only both high court and supreme court president कौन रहबो पिला माने आर सटीक उत्तर टी दबो कौन what is the right answer can you give me answer कौन रहबो पिला माने सुनील मंजरी पंकज सिकुन केउंझर रो मंडुआ रे रहउछ पिला माने ओके के केउंझर रो मंडुआ रे रहे ओके the right answer option C होबो the supreme court and high court okay next ଯିବା citizenship articles are covered under citizenship articles are covered under article 1 to 4 5 to 11 12 to 35 36 to 51 कौन रहबो पिला माने 5 to 11 होगा राइट आंसर ओके 5 to 11 बहुत बढ़िया 5 to 11 होगा राइट आंसर ओके 5 to 11 ओके नेक्स्ट ଯିବା पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप अंडर पार्लियामेंट पाकर पावर अछि रेगुलेट करियाकू सिटीजनशिप केते नंबर आर्टिकल अनुଯାयी पिला माने आर्टिकल 5 9 10 एंड 11 कोन रहबो पिला पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल गुड इवनिंग राकेश कुमार बहुत दिन पर मु आसिली आउ तुम क्लास आसिल तो थैंक यू ऑल ऑफ यू समस्त ओके ना अरे मो देह खराब थिला मु क्लास करि पा नथली मासे तमाम ओके हीलिंग करथि म्यूजिक आर्टिकल 11 इज राइट आंसर आर्टिकल 11 हो राइट आंसर ओके next the citizenship act was enacted in citizenship act as enacted in केते मसिया रे 1949 50 55 62 ओके कौन रहबो पिला माने देखो सिटीजनशिप एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1955 होबो राइट आंसर ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी होबो पिला माने सटीक उत्तर दिया ऑप्शन सी होबो ओके नेक्स्ट जीवा सिटीजनशिप बाय बर्थ इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच ऑफ द एक्ट ओके इट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही होबो ऑप्शन बी होबो मन रखितो सिटीजनशिप बाय बर्थ इज प्रोवाइडेड अंडर एक्ट 1950 सिटीजनशिप एक्ट 1955 होनो जाई ओके नेक्स्ट जीवा कि हमरो द सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कोड इंस्पायर्ड है कि आनी को जगह हम इंस्पायर्ड है सिंगल सिटीजनशिप पे यूएसए कनाडा यूके फ्रांस कौन रहबो पिला माने की आंसर टी कहि परिबा देखिबा देखो सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए कनाडा यूके एंड फ्रांस इट इज यूके यूनाइटेड किंगडम ला आमे बर करते यूनाइटेड यूएसए रे डुअल सिटीजनशिप ओके यूएसए रे कोन हो डुअल सिटीजनशिप पाइबा ओके यूके इज राइट आंसर नेक्स्ट बा the article deal with the right of citizenship of a person migrate from Pakistan okay है ना जो citizenship रो पार्ट है ना कौन रहबो पिला आर्टिकल 6 7 8 9 article deal with the right of citizenship of a person migrating from Pakistan केते नंबर आर्टिकल एटा मेंशन है छी अच्छा करै छी उट क्लास बोते आर्टिकल 6 रे मेंशन है आर्टिकल 6 रे मेंशन है त भितरु पर जिबा ओके नेक्स्ट जिबा voluntarily acquisition of foreign citizenship okay
voluntarily acquired करथिबो foreign citizenship to termination under which article okay led to termination तो voluntarily तुम जदि कोन प्रकार foreign citizenship acquire कर देछो से जगह रे तमरो citizenship हरै बसिबो ओके तो केते नंबर आर्टिकल ऑन दे आर्टिकल 8 9 10 एंड 11 कौन रहेगा पंकज सिकुन मंजरी राकेश एंड all of you okay सुनील कौन रहेगा पिला माने voluntary acquisition of foreign citizenship led to termination of your citizenship under article it is 8 or 9 okay it is 9 okay it is 9 it is 9 over right answer it is correct answer is 9 okay 9 focus 9 होगा the fundamental duties are mentioned केते नंबर पार्ट रे fundamental duty रो मेंशन अछि पिला okay fundamental duties रो मेंशन केते नंबर आर्टिकल अछि पार्ट 3 4 4a 5 okay कौन रहेगा पिला माने सटीक उत्तर देलो फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ओके है प्रीति बहुत दिन पर देखा तुमर मु देखा तुमर ही प्रणाम 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 मोर क्लास हे नतला मासे तमाम आ एबडू इवनिंग रे क्लास हो ओके मे बी जदि डायरेक्ट लाइव न रे भी रिकॉर्डेड होबो किंतु होबो ओके डोंट वरी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द पार्ट यू नो ऑप्शन सी पार्ट 4a ओके पार्ट 4 केमिति अछंती एबे टिके भलो अछि ओके fundamental duties are under which article okay केते नंबर आर्टिकल ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज हमें जानियो पाइबो पिला माने ओके आर्टिकल 50 51 51a 52 कौन रहबो पिला माने ओके ओके पंकज वेलकम है ना 51a हो पिला माने राइट आंसर 51a ओके 51a हो नेक्स्ट जीवा the fundamental duties added by which of the amendment okay केते नंबर amendment द्वारा fundamental duties गुरो ऐड करा जाय छी 42 constitutional amendment 44 constitutional amendment 86 and 52 कौन रहबो पंकज सिकुन प्रीति सुनील एंड मंजरी मंजरी कोड it is article 42 on जाने बहुत ओडिया 42 is on जाय ना 42 on जाय नेक्स्ट जीवा प्लीज समस्त को अनुरोध प्लीज लाइक करो ना fundamental duties were inspired from which of the constitution fundamental duties were inspired from which of the Indian constitution okay sir which of the constitution है ना देखो fundamental duties गुड़ा हम को जगह यूएसए यूके यूएसएसआर कनाडा बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया प्रीति है ना यूएसएसआर बहुत बढ़िया एमिति एक्टिव था सब बड़े केमिति जॉब इथर क्रैक करो समस्त मोर इतिहास ओके एमिति बंश क्लास रे पाठ पढ़ा रे एई जो 4-6 मास आरआई पे जो दिन आरआई परीक्षा से दिन तुम मुंड बहुत बड़ बोझ उतरी जो से दिन पर एमती पढ़ जमी कि जीवन लास्ट दिन तक है जोसना केबेठू स्टार्ट केबेठू माने कौन माने ए क्लास केबे स्टार्ट होइछि ना आज क्लास कथा कहछो माने को क्लास कथा कहछो जोसना ओके देखो 11 fundamental duties were added by okay 11 fundamental duties were added by कौन 44th amendment act 52 86 and 97 कौन रहबो पिला माने बहुत बड़े पंकज जोशना एंड सुनील प्रीति बहुत बड़े देखो पिला सटीक उत्तर जब देखिबा जस्ट गिव मी 1 सेकंड अब टिके पर मु कॉल करजे it is 86 amendment act हला कौन रहबो पिला माने 86 amendment ओके 86 बहुत बड़ा है ना नेक्स्ट जीवा फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल एंड देखियो हमें एनफोर्सेबल बाय कोर्ट एंड एनफोर्स्ड बाय प्रेसिडेंट ओके कौन रहबो ओके देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट एंड प्रेसिडेंट कौन रहबो पिला माने देखो नॉन जस्टिसेबल ओके ओके देखो इट इज नॉन जस्टिसेबल ओके आ गुटे कथा मु पेड क्लास पे बोलो करथिली किछि पिला पैसा देथिले सेमानो पैसा रिटर्न हे जिवो कर दे जिवो ओके सो डोंट वरी एंड बहुत गुटे पिला पैसा देथिले भरसर मु ताको पैसा मु रिटर्न कर दिबो हला देखो डीपीएसपी आर मेंशन इन डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द आर्टिकल पार्ट 3 4 4a 5 ओके एरा कराई एटा रिपीट गेला क्वेश्चन ना तो देखो पिला माने इट इज 4 है आर्टिकल 4 होला 4 आर्टिकल 4 बहुत बढ़िया यस बहुत बढ़िया प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब ओके नेक्स्ट बा डीपीएसपी केते रु केते भीतर कवर है आर्टिकल केते रु केते भीतर 14 टू 18 19 टू 22 26 टू 51 51 ए
कौन रहिबो पिला माने सठिक उत्तर दे डीपीएसपी आर कवर्ड अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल 14 to 18 19 to 22 and 36 to 51 और 51 ए देखो पिला माने सठिक उत्तर पिला माने रहिबो कौन 36 to 51 बहुत बढ़िया 36 to 51 होबो सठिक उत्तर हला ना जीवा DPSPs are borrowed from which of the constitution को constitution को हमें डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा को हमें बोरो करी जानछे यूएसए आयरलैंड यूएसएसआर जोड़ा कि वर्तमान रशिया है ये तापर ऑस्ट्रेलिया ओके अच्छा वर्तमान जो ईरान रो जो लीडरशिप जे तांकर फाटालिटी देखियो मिला ताके तांकर देहांत घटला तांकर नाडा कोन कहि परियो किए कहि परियो जाको इजराइल बॉम्बिंग करके मार देला जो ईरान रो लीडरशिप तांकर नाडा कोन है परियो लेखो कमेंट बॉक्स ओके कन्डा पेस सेटा ओके एटा कोन रहबो पिला माने इट इज ओबो आयरलैंड ओके आयरलैंड ओबो सटिक तला हमें बरो करछे कोन डीपीएसपी टा आयरलैंड रो बरो करछला आयरलैंड रो में बरो करछे ओके नेसिबा डीपीएसपी आर कोन जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट फंडामेंटल राइट्स ओके कोन रहबो एटा फंडामेंटल राइट्स हबनी एटा जानछो ये तीनटा भीतर ऑप्शन कोन डीपीएसपी आर जस्टिसेबल इन नेचर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट कोन रहबो पिला माने बहुत बढ़िया नॉन जस्टिसेबल यस यस आंसर दियो पिला माने बहुत बढ़िया है ना देखो पिला इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर ओके नॉन जस्टिसेबल इन नेचर ओके नेसिबा organization of village panchayats as under which of the article okay organization of village panchayats are under which article 38 39 40 and 44 कौन रहेबो पिला माने सटीक उत्तर एटी देला देखिबा प्लीज समस्त को अनुरोध प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो भलो लागुतले क्लास टी ओके नथरे किछ आवश्यक नै किछ आवश्यक नै देखो आर्टिकल 40 होबो सटीक उत्तर आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर ओके आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर यूसीसी जोड़ा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हला प्रथम कथा यूनिफॉर्म सिविल कोड केते नंबर आर्टिकल अनुसार आसे आर्टिकल 40 42 44 एंड 48 कोन रहबो पिला मन देखो पिला राइट आंसर आर्टिकल 44 होबो राइट आंसर आर्टिकल 44 प्रथमे यूसीसी टा को गोवा रे बिफोर इंडिपेंडेंस हेइतला आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड आमर जे सी ग्रहण करते ओके नेसिबा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी रु एग्जीक्यूटिव टार सेपरेशन केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन नै पिला माने 39 50 51 38 कोन रहबो हां बस बहुत बढ़िया मु अच्छा ओडिसा रे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट गुडा को भी बाहरियो हला तो समस्त मन के गोटे जिन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट गुडा डिफरेंट जॉब भी पारे तो अलर्ट थाओ जॉब पाई समस्त ओके आर्टिकल 50 ओके आर्टिकल 50 इज राइट आंसर हला मन रखो नेक्स्ट बार धन्यवाद सरीगला फ्रेंड्स आज पंकज सुनील प्रीति एंड मंजरी एंड अन्य बहुत गुडे पिला नुआ पिला मिसथिले थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड आमर चेष्टा करछि इवनिंग रे आना जीव क्लास टी ओके गंजाम रु यूसीसी लागिले लोक माने ओके देखो थैंक यू एवरीबॉडी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ इट्स लाइक तुम भल लागिला लाइक करो ओके थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास